Good morning, guys. Welcome to our channel. So we are in Balasore today. Immediately after we got our bike from the showroom, we traveled to Balasore in the night, and We started around 8:30 p.m. and then we reached around 11:30 in the night. Took some break. The first ride experience was okay. I rode like 100 kilometers, and then I gave my brother-in-law Benny for another 100 kilometers. So the ride experience was good, but as a rider, but as a pillion, I won't say it was that great, but I think it could be because I had a bag on my shoulder, and maybe because of that, the pillion experience was not that great. So today we are thinking of giving the bike for a first service. It's 200 kilometers now, but then still I feel that we should complete the first service now because tomorrow we are planning to head towards Bangalore, and then we don't want to stop on the way for just a service which takes almost a day. So since I'm here in Balasore, I'll give it for the first service, and then we plan to head back to Bhubaneswar in the evening, but that is tentative for now. But let's see the service experience and the service cost also. I'll put it up. So just stay tuned and watch out for the new video. Thank you. ये अपना चड्डी बड्डी है तो कुछ बोल रहा था कहीं निकल रहा है मतलब हम लोग सर्विस के लिए आए फिर हम सोचे कि थोड़ा रोकते हैं इसको भी लेकिन बहुत जल्दी निकल रहा है कुछ बोल रहा है कुछ करने जा रहा है क्या करने जा रहा है खून देने जा रहा हूँ. तो उससे क्या होता है उससे वेट कम हो जाता है. कुछ और कुछ होता 10 किलो कम हो जाएगा. है और कुछ होता है बोल 1 लीटर में 10 किलो कम हो जाएगा. करने से कैसा लगता है करके देखो, अच्छा लगता है. क्या करके देखे भाई So guys, the servicing is done, and it costed me around 1621, and I'll be putting a picture on the same. So right now we are starting towards Bhubaneswar, and we will try to reach Bhubaneswar by 6:30. It's going to be 3:30 now, so by 6:30 we should be in Bhubaneswar, 6:37 max. And the first servicing had nothing, but they just changed the engine oil, and unfortunately they did not let me click a picture or video inside the service center because it seems some kind of permission is required from the MD. So we couldn't obtain that because of time crunch. So what we did was just stood there and was able to see what they were doing. So that was a kind of experience for me at least. So we stood there, we saw what all the work was done. So they changed the engine oil, they cleaned the filters, and they checked my chain, my brakes, and yeah, I think that's all. And yeah, looped my chain as well. And then yeah, that's all I think. And then the whole service was done within 40 minutes. So that was again a pretty fast. I hadn't booked a pre-service in the app, but I just went directly to the service center, and then I asked if they can service my bike, and they say yes, they have slots free, so they can book it. So they booked my service, and the service was over within 40 minutes. So that was pretty zippy. So while returning from Bhubaneswar, we filled the tank again, full tank. और ये सेकेंड टाइम था फुल टैंक
क्योंकि ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स कर चुके थे, तो एम्प्टी तो हुआ नहीं था, 70 किलोमीटर्स का रेंज था, बट वी फिल्ड द टैंक। तो ये ट्रैफिक हमको देखने को मिला व्हेन वी एंटर्ड भुवनेश्वर। और दिस वाज नॉट द पीक आवर्स, बट स्टिल वी फाउंड सम ट्रैफिक, इट वाज ओके। Exactly 400 kilometers, and we'll share the experience very soon. तो फिर घर पे अपना बैग रखे और निकल गए हम टॉप बॉक्स ढूंढने के लिए। और एक दुकान गए हम पटिया में टॉप बॉक्स लेने। एंड वो जाते ही लेट हो गया था ऑलरेडी, तो हम कुछ शूट नहीं कर पाए। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आप देखना टॉप बॉक्स माउंट हो गया होगा। तो आज का दिन ऐसे ही बीत गया। हम लोग बालेश्वर से भुवनेश्वर आए। बालेश्वर में हम लोग गाड़ी का सर्विसिंग कराया, जैसे कि आप देखे होंगे। और सर्विसिंग के टाइम वी आर नॉट अलाउड टू शूट, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर विल ट्राई टू शूट इट विथ गुड परमिशंस। किसी से परमिशन लेंगे हायर अथॉरिटी से, एंड देन विल ट्राई टू शूट। और एंड हाँ, टॉप बॉक्स भी हम लोग खरीद लिए हैं, नहीं दिखा पाए। नेक्स्ट व्लॉग में फॉर श्योर आपको देखने को मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत दुख होता है, व्यूज़ मिलता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोग जल्दी ही निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। वो वाला भी राइड का कुछ क्लिप्स आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून। तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।